Okay, welcome back to your own channel, Trending Stocks. So we'll start with this, chart check now. The first one is Swapnesh. Swapnesh is asking about Diwali pick. Swapnesh, here I have already given two Diwali picks. If you notice, one is in ITC and one is Patanjali Foods. और लेवल्स मैंने यूट्यूब पे भी डिस्कस कर रखे हैं. आई पोस्टेड टू वीडियोज ऑन दैट, राइट. Rajesh asks about ITC. Rajesh, I have already shared that link also with you, and it's my Diwali pick also. Shekhar Sharma asks about Parag milk. Okay, let's see Parag milk. देखो, आई थिंक मैंने इनको दो तीन बार पहले भी बता चुका हूँ कि पराग मिल्क पे मेरा जो टेक्निकल टारगेट है, इट कम्स अराउंड 250 प्लस. तो यू कैन होल्ड इट. अब फ्रेश बाय तो बनता नहीं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी अप्रोचिंग द टारगेट. So maybe after that, with momentum, it goes a little bit up, but one should book, profit over here. Harshit Gupta asks for Awadh Sugar. Awadh Sugar देख लेते हैं यार. Awadh. It's above our, green line, alligator line. That is, it is in buy zone. अब यहाँ पे कोई राउंडिंग मोटा अभी तो बना नहीं है, और बन सकता है. द वे इट इज गोइंग, इट विल कंप्लीट अराउंड 870 अप्रॉक्सीमेट. बट इट विल बी फर्स्ट अटैम्प्ट, तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है. बट द क्वेश्चन इज, विल इट गो देयर और नॉट? वी आर नॉट श्योर. तो व्हाट यू कैन डू इज कीप ए स्टॉप लॉस. इफ यू आर होल्डिंग, यूज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. इफ़ यू वांट टू बाय फ्रेश, वैसे तो आई प्रेफर कि आप ब्रेकआउट के बाद बाय करो. अदरवाइज यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस बिलो 680 or even 670, because last time it took support over here, and keep holding for the next targets. Sorry, I can't understand the name. It's regarding Indigo Paints. Can you see this thing? It has just crossed the alligator line. So basically, it is in a buy zone now, right? So if I think fresh buy can be done here, buy can be done here for the target of this previous high, and maybe if it goes beyond it, because I think they posted good results, I guess, right? So keep a stop loss below this candle, which comes around 1420. Fresh buy can also be done here. First target will be this 1600, and then if if crosses that further highs can be seen. So good entry point. Mandal Kulkarni says Oro Pharma. देखो, Oro Pharma मैंने, like I said, अब तो previous high is the target, which is 980 approximately, 970 980. अब वहाँ तक जा सकता है, the way this candle is formed ना. तो most probably it will hit this level. Fresh buy I will not advise here, because अगर यहाँ से जाके अगर वापस आया तो it will come up to this 770 780. So either you wait for fresh buy breakout, or if you want to buy here, then your stop loss will be quite deep, which is 850. तो अगर इतना आप अफोर्ड कर सकते हो स्टॉप लॉस,
अच्छा, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज अगर स्टॉक एक ही आई मीन डायरेक्शन में, यूनिट डायरेक्शन मूव कर रहा हो एंड यू आर नॉट फाइंडिंग इट अपॉर्चुनिटी टू एंटर, जैसे सी डी एस एल इज हैपनिंग नाउ, वहाँ पे यू कैन डू इज, मान लीजिए आपने से 100 स्टॉक्स खरीदने हैं, स्टार्ट बाइंग विद 10 स्टॉक्स, 20 स्टॉक्स, it moves further up, then another ad, and this way you can limit your stop losses, I mean losses, in case if it takes u-turn, you can buy in staggered manner. That is best approach. Shubham asked about Deepak Nitrite. शुभम जी, ये दीपक नाइट्राइट है, नाइट्रेट नहीं है. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स. देखो, ट्रायंगल में है, ब्रेकआउट आया था, इट गॉट फेल्ड विद मार्केट. अगर इसके ऊपर फिर सस्टेन करता है देन इट माइट मूव. अभी तक कोई ऐसा फ्रेश ऐसा दिखा नहीं है कोई दैट वी कैन बोस्ट ऑफ ना कि चलेगा. आइदर इट क्लोजेज अबव प्रीवियस हाई. वैसे तो दिस ब्रेक ट्रायंगल, इफ सस्टेन्स अबव दिस, it saw buying, so I think buying is seen, but it is not sustaining. Actually, the entire chemical sector is not performing. This is the issue. तो वो जब करेगा करेगा, because what happened earlier, this stock has seen such a big up move. अब उसके बाद game is over for sometimes months and years. IRCTC में भी तो यही हुआ है, right? Then comes scams. Again, it's moving in a channel. तो अभी तो sell signal generate हो गया है. If it closes above 2400, I think I had told about this last week also. If it goes above 2400, then 2600 can be seen. If it goes below, then you have to see what are the, I mean, this will be our final uh, support, which is 2070, which I don't think it will go there, but you never know. Right now, fresh buy is not there. I should not be done there, क्योंकि जब तक मोमेंटम ना होगा, जब तक एक कोई ब्रेकआउट नहीं होगा, इट विल कीप टेस्टिंग योर पेशेंस. अमन आस्क अबाउट डिक्सन. देखिए, डिक्सन तो मेरी अपनी रिकमेंडेशन है. आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन डिक्सन, राइट. मेरे ये टारगेट पेंडिंग है 6700. इस ब्रेकआउट का है, एंड इफ इट ब्रेक्स आउट अबव दिस, एंड इट विल, इट्स जस्ट रिट्रेसिंग इन बिटवीन. कीप होल्डिंग. फ्रेश बाइंग कैन ऑल्सो बी डन. आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन डिक्सन. Harshit is again asked about data patterns. देखो, data patterns is coming back to the support. Last time it took support here, right? तो अभी मेजर सपोर्ट के आसपास है. रिट्रेसमेंट इज ऑलमोस्ट डन, आई थिंक. तो if it forms a green candle over here, keep a stop loss below this, which is 1700 closing basis per, because if you see there was a wild move, but this is weekly candle. Sometimes you can see week, you need to note weekly close. I mean, हो सकता है एक बार इसको टच करे and then it moves up. So you need to see where you can enter. Just try to find entering opportunities. Sneh Jariwala asked about Gujarat Pipavav. होल्डिंग फ्रॉम 100 रुपीज़, तो ठीक है. अब देखिए, आइडियली आई थिंक मेरा, आई मीन, दिस प्रीवियस हाई शुड बी द resistance zone, which is 150. So 150 can be the target, and above that next will be this. Now you don't know where volumes are happening. You see volume buy is happening here.
So what you can do is, if you're holding, keep a stop loss a little bit deep. अब देखो ये आया retrace, it took the support at our alligator which is 118. So I don't know whether it will come again there or not, but you can, it is above your holding, you can keep a deep stop loss of 118 and hold it. Most probably it will go and touch 150 because the volumes are seen here. तो होल्ड करो, चलेगा आई थिंक। 150 का पहला टारगेट तो है ही है, एंड देन कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। नाउ यू आर इन पॉजिटिव। संदीप आस्क्स अबाउट, संदीप जना आस्क्स अबाउट लेटेंट व्यू। लेटेंट व्यू यार मैंने लास्ट वीक भी बताया था आई थिंक, है ना? लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, इट्स द सेम स्टोरी ना। ब्रेकआउट आया था, आई मीन उसके बाद रिट्रेसमेंट आया, होल्डिंग द एट द सपोर्ट। नाउ इट इज़ अब टू बी सीन कि ये सपोर्ट ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। देखो ब्रेकआउट तो नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, इट इज़ जस्ट टेकिंग सपोर्ट। अब या तो कोई गुड न्यूज़, जस्ट समथिंग हैपन्स, कोई अच्छा रिजल्ट आए, देन यू कैन प्लान ऑफ बाइंग। बट इफ़ यू आर होल्डिंग, दिस इज योर बॉर्डर लाइन विच इज़ 395। 395 का स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस, उसको होल्ड करके रखो। अगर उससे नीचे आता है देन यू नीड टू एग्जिट। अजय पांडे आसपास, राधिका ज्वेल्स। अजय जी ये आपका राधिका ज्वेल्स, देखो दिस वॉज रेजिस्टेंस जोन, तो इसने यहीं से वापस मूव किया है। कोई बहुत ज़्यादा चार्ज तो है नहीं, दैट बट सी वॉल्यूम इज देयर, वॉल्यूम इज देयर। अब अगर इफ आई से स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस तो बहुत डीप आएगा, 38। फ्रेश बाय आई विल नॉट एडवाइज। डेली पे भी आई मीन इट इज़ नॉट क्लियर, द पैटर्न इज नॉट क्लियर। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कीप होल्डिंग। अगर आपने पहले से बाय कर रखा है, कीप स्टॉप लॉस ऑफ 38। if it is showing strength, it has some volumes, so maybe it will go above. Vijay Kumar asked about GMR Infra, ये संजीव बसीन का है आई थिंक स्टॉक, बहुत। GMR Infra, देखो रिट्रेसमेंट वॉज देयर, इट मेड अ डोजी up, now two bullish candles. So I think you can keep a stop loss below 52, where it took support. अगर ज़्यादा डीप लेना है तो it will come around 50. Let's see, it should move up. It is I think it is in on longer charts it's in uptrend. So quite possible it will go here 65. It is showing strength. It made a doji here. प्रतीक जैन आसवा ADF फूड्स। प्रतीक जी यहाँ देखते ADF फूड्स आपके, इट लुक्स गुड। देखिए अगर आप यहाँ से कैन यू सी दिस थिंग, देर वॉज अ राउंडिंग बॉटम एंड देन ब्रेकआउट, वो सस्टेन कर रहा है इन बिटवीन। देखिए यू हैव टू think on a little longer term. I mean, you can hold it without stop loss also, but if you want to keep a stop loss, it will come around 197 or maybe 200. इसका target will be, you calculate the length of this top to bottom and place it here at the breakout level at 298. तो 300 तक possibility है जाने की इसकी, right? So sometimes what happens is breakout happens and then they keep accumulating, consolidating here, and one good news, it will move very sharp, and this is happening in most of the stocks, but the breakout is there.
महिमा सचदेव आस बाउस AWL। ओके देखिए महिमा जी आपका AWL। अच्छा विल्मर यार इसका आप क्या देखना। आई मीन वाई आर यू, आई मीन ये देखिए ना। When it was here around somewhere 500 600, I told someone that it will touch 350 and quite possible it will touch 250। यार आपको बॉटम फिशिंग करनी ही क्यों है? अब स्ट्रेंथ को बाय करो ना। व्हाई आर यू बाय गोइंग टू बाय अ स्टॉक दैट इज मेकिंग लॉस? वी स्टॉक मार्केट में यू नीड टू बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस। जितने भी बाय अप मूव आएंगे वहां से एग्जिट ही बनेगा। मैं कभी भी उस स्टॉक्स को जिसमें आई मीन आई डोंट फाइंड एनी यू नो फंडामेंटल और टेक्निकल स्ट्रेंथ, आई नेवर बाय इट। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज टेक्निकल फेल्स बट यू नो दे हैव अ फंडामेंटल बाय ओवर देयर। जैसे रोजारी बायोटेक में था, वो ब्रेकआउट फेल हो गया बट वी आर होल्डिंग क्योंकि उसमें फंडामेंटली इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक। अदानी विल्मर में मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा ना। मे बी, but the again thing is investors must be accumulating जो DIS वगैरह है, but they have very long patience और उतनी patience mostly people don't have। So I, for me it is strictly avoid। और bottom fishing तो करना ही मत। अगर ये यहाँ से 800 से 200 से 200 से 20 भी जा सकता है, you never know। Info Edge। इट टुक द स्पॉट एट आर एलिगेटर लाइन राइट। अब यहाँ से ये वापस अप मूव दिखाने लगा है। फर्स्ट टारगेट विल बी 4900। कीप अ स्टॉप लॉस बिलो दिस दैट इज 4100। अप मूव दिख रहा है। वॉल्यूम्स इतने अच्छे नहीं है बट ऑफ कोर्स यू कैन लेट्स सी इफ इट कम्स हियर दैट विल बी फर्स्ट रेजिस्टेंस। देन यू कैन थिंक कि इसके बाद ये अप मूव करता है या नहीं करता है। Ranjit Kumar Mandal, Tata Powers. Ranjit, I'm very, bullish on Tata Power. 300 is a target. For me, it is 300 the target. और यहाँ पे it had given such a beautiful re-entry opportunity, right? So keep a stop loss below. If you are buying here, keep a stop loss of 230, which I don't think should come. And first target will be 270, the previous high, and if it crosses, then 300। My actual target is 300। और ये देखिए, इफ यू सी देखो ये जो हमारा था राउंडिंग बॉटम, इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो द मोमेंट इट क्लोजेज अबव दिस इट विल गेन मोर स्ट्रेंथ। Harshit Gupta says again about car trade। यार car trade I had given recommendation when it was around 400 something levels, 490 I guess। हमारा तो डबल हो गया पैसा, 75% रिटर्न्स। बट आई थिंक इट इज स्टिल इन बाय जोन। अभी भी आई कैन सी टारगेट ऑफ 1100। बट एंट्री अब यहाँ पे नहीं बनती। मे बी व्हेन इट रिट्रेसेस टू लिटिल लेस, मे बी 800 और समथिंग, 800 780, दैट कुड बी द बेटर री एंट्री अपॉर्चुनिटी। इट इज़ इन बाय जोन। और अगर आप मंथली पे देखो तो मंथली में भी हमारा इट हैज़ क्रॉस द मेजर हर्डल ऑफ बाय जोन। बट buy only when it comes around 800 or 780। अब रिट्रेस तो करेगा थोड़ा बहुत ना। किरण आसवाल यूपीएल मंथली पे तो बहुत वीक है यार, वीकली पे भी वीक है। देखो until unless it is above our alligator line I will not recommend, right?
ये देखिए, ये प्रीवियस जो थी, दिस प्रीवियस, none, I think it is near support. Previous resistance is current support now. But let's see if it holds it or not. But strength तो नहीं है. You don't see any strength in this stock. Nikhil Chawla, JP Power. Yeah, JP Power में there is some good news that they are getting 10,000 crores or something. निखिल जी, अब इफ यू आर होल्डिंग, अब मैं देखो यहाँ पे आई डोंट नो फ्रेश बाय, इफ यू आर आस्किंग अबाउट फ्रेश बाय और नॉट, फ्रेश बाय तो आई डोंट रिकमेंड. इफ यू होल्डिंग, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 12 एंड लेट्स सी वेयर इट गोस. पेनी स्टॉक्स में या यू, आई डू नॉट फील कंफर्टेबल. इनके चार्ट्स ऑफन कैन डिच यू. यू कैन होल्ड. अब देखिए, दिस इज प्रीवियस 11 का भी हो सकता है, इट मे टेस्ट, and it is possible that it will make further up moves, you never know. So in that case, what you can do is, if you're holding, use trailing stop loss. Buying should not be done at all. मैं तो वैसे भी एनी स्टॉक दैट इज अंडर 50 आई हार्डली रिकमेंड. एक वो सुजलॉन किया था, और एक और स्टॉक है जो मैंने रिकमेंड किया है अपने प्रीमियम ग्रुप में, विच इज़ लेस देन 50 रुपीज़. राजन सूरी asked about दिलीप बिल्डकॉन. देखिए, इट इज़ लुकिंग गुड. यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छा हुआ है. इट इज़ अबव एलिगेटर लाइन. अभी कोई पैटर्न तो नहीं बना, बट येस इट कैन गो टू प्रीवियस हाई विच इज़ 580. But how much time it will take, you never know. Stop loss will be below 270. जो हमारा एलिगेटर विल कीप दिस एज अ स्टॉप लॉस. तो हो सकता है ये 270 तक, 580 तक जाए. बट कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. वैसे तो इट इज़ लुकिंग पॉजिटिव, राइट. अली रजा खान आस्क्ड अबाउट वीए टेक. या ये तो अच्छा लग रहा है मुझे, है ना. इट इज़ लुकिंग गुड. I had measured the target of this 700 740, but previous high will be the our first target. यहाँ पे राउंडिंग बॉटम ही बना है, तो 640 शुड बी द फर्स्ट टारगेट. ये जो प्रीवियस हाई है 640, दैट विल बी द फर्स्ट टारगेट. स्टॉप लॉस यू कैन कीप बिलो दिस कैंडल विच इज़ 500. यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बन चुका है, इफ़ यू सी ऑलमोस्ट. तो इसके ऊपर आई थिंक इट शुड सस्टेन अबव दिस. 640 विल बी आवर फर्स्ट टारगेट. तो 100 रुपीज़ अपसाइड इज दियर. My longer term is this longer term target can come to 740 also. So that is it. I think I've given my recommendation on, I mean my chart review on all the charts that I am seeing. कुछ रह तो नहीं गया? No, all are done. So that will be all for today. Have a nice day and happy Diwali. Enjoy.